अपना सामान खरीदने को, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना खरीदते हैं। गांव की तरफ देखते हैं तो इरिगेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, हर बजट के बाद लोग आकर कहेंगे कि भाई हेल्थ केयर में और एजुकेशन में ज्यादा खर्ची है। तो आज अगर मैं कहूं रूरल इकोनॉमी में पैसा डालना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, नेशनल सिक्योरिटी में डालना, तो ये पैसा आएगा कहां से? पैसा इकट्ठा करने का तो सरकार के पास एक साधन है, टैक्सेशन। और इस सभाघर में बैठे हुए लोग आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जितनी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत है टैक्सेशन इकट्ठा करने की, हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी व्यवस्थाओं में एक प्रक्रिया बन चुकी थी कि जिसमें टैक्स कैसे न और क्यों ना दिया जाए, इसके हम तरीके ढूंढते थे। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 70 साल इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो व्यवस्था चली है, उससे ज्यादा विचित्र व्यवस्था जो कि उस इवेजन को इंसेंटिवाइज करती थी, ऐसी नहीं थी। पूरे देश में केंद्र में अलग टैक्स, राज्यों में अलग टैक्स, हर स्टेट में अलग टैक्स, किसी भी प्रोडक्शन स्टेज पर 7 अलग अलग स्टेजेस के ऊपर टैक्स, जो टैक्स एक बार दे दिया अगले स्टेज में उसके ऊपर टैक्स, इनपुट का क्रेडिट नहीं, हर टैक्स की रिटर्न, उसकी हियरिंग, इंस्पेक्टर से सामना, और फिर जब आप असेसमेंट के लिए जाते थे तो हैरेसमेंट और फिर करप्शन का स्कोप, और इस सारी चिंताओं से फिर व्यवसायिक भी यह सोचता था कि अगर इस व्यवस्था से बचना है तो वो फिर उल्टे सीधे तरीके सोचता था इसके बदलने के। और देश को इस मोड़ पे हमने लाकर खड़ा कर दिया कि देश की क्षमता कुछ है और हमारी एक्चुअल कलेक्शन कुछ है। तो जीएसटी का आइडिया इसी में से पैदा हुआ कि पूरे देश की कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन में केवल एक टैक्स हो। उस टैक्स में जितनी कमजोरियां पुराने टैक्स में थी उसको हम दूर करें। कोई वेरिंग रेट नहीं होंगे, कोई भी सामान पूरे देश में जा सकता है, कोई नाके नहीं होंगे, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं होगा, जो आपने इंटरिम स्टेज पे टैक्स दे दिया फाइनल आउटपुट पे आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। आपने अगर रिटर्न फाइल करना है तो ये जो मल्टीपल रिटर्न्स और मल्टीपल इंटरफेस है इसको समाप्त करो। आपका इंटरफेस केवल एक होगा और वो सॉफ्टवेयर के साथ होगा। आप में से जो लोग, बहुत अधिक लोग प्रैक्टिस करते हैं, उस इंटरफेस में से क्या क्या बुराइयां पैदा होती हैं आप जानते हो। फिजिकल इंटरफेस को एलिमिनेट करें और उसको एलिमिनेट करने के बाद एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्सेशन व्यवस्था भी हो और उसके डिटेक्शन की भी व्यवस्था उसी में हो जाए। इससे कंप्लायंस का बेस बढ़ेगा, रेट्स को ज्यादा रीजनेबल करने का अवसर मिलेगा, कलेक्शन ज्यादा होगा, रेट ज्यादा सामान्य बनेंगे, हैरेसमेंट और कंप्लायंस बर्डन कम होगा, और स्वाभाविक है कि देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी, फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, सरकारों के हाथ में साधन अधिक आएंगे, और जब
होती है तो स्वाभाविक है कि गरीब के ऊपर पैसा खर्चना भी अधिक होता है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी परिवर्तन आता है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बेस्ड तकलीफ जरूर आती है, लेकिन मैं केवल एक वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूं। टैक्सेशन का बर्डन तो अंत में जाकर कंज्यूमर के पास लगता है। अगर कंज्यूमर पे पड़ता है तो कुछ इंटरिम जो मध्यस्थ हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हैं या ट्रेड में हैं, वो तो बर्डन पास ऑन करते हैं। कंज्यूमर कहीं देश में शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि जो बास्केट ऑफ टैक्सेशन है ओवरऑल, उसको हमने और रीजनेबल करने की कोशिश की है। तो एक दो ट्रेड के लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? ट्रेड ने तो अपनी जेब से पैसा नहीं देना, ये तो कंज्यूमर पे जाना है। कारण बड़ा स्पष्ट है कि कई बार हमारे समाज में एक जो अभ्यास पड़ गया कि टैक्स न देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, जब हमने 1% सोने गोल्ड पे लगाया टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तो पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। अब जीएसटी काउंसिल ने कहा 3% कर दो, तो उन्हीं लोगों ने पूरे देश में हमारा स्वागत कर दिया। क्योंकि इस बीच में चाहे 6 महीने भी नहीं बीते थे, एक माइंडसेट में परिवर्तन आया कि अब देना पड़ेगा। मैंने इसको डीमोनेटाइजेशन के समय एक कहा था कि इंडिया नाउ नीड्स टू डिफाइन द न्यू नॉर्मल, and the new normal is that I must pay whatever taxation is to be paid. और एक बार मुझे ये आदत पड़ जाए, हम लोग जब कल्पना करते हैं, मैंने बजट में कहा था कि डायरेक्ट टैक्सेशन में 130 करोड़ के देश में 5 लाख से ज्यादा इनकम दिखलाने वाले 78 लाख लोग हैं, 78 लाख, जिसमें से 61 लाख सैलरीड लोग हैं। यानी कि जो सारा यूनिवर्स है, जिसमें वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर सब आते हैं, 130 करोड़ के देश में 17 लाख लोग। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जितने ये 17 कानून गए, इसमें से जो 3 बड़े कानून हैं, सर्विस टैक्स, वीएटी और एक्साइज ड्यूटी, उसमें कुल मिलाकर 80 लाख लोग थे जो रजिस्टर्ड थे। यानी 1% से कम, आधा परसेंट, यानी 0.6% ऑफ द पॉपुलेशन। तो कौन सा वर्ग है जिससे हम डील कर रहे हैं? दिस इज द टॉप 1% इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ इंडियन सोसाइटी। और दैट टॉप 1% इन अ कंट्री वेयर आईटी हैज डोमिनेटेड द वर्ल्ड शुड से कि भाई मुझे कंप्यूटर क्रैकल करना नहीं आता, इसलिए ये टैक्स मत लगाओ। वी आर नॉट डीलिंग विद द ट्राइबल्स, we are not dealing with the weakest section, we are dealing with the top 1%. And the argument is, what will those who don't know how to operate the software do? Now, at least in a country which is dominating the world over in software, the top 1% should have the wherewithal. और जो उनमें भी बहुत छोटे हैं, 20 लाख तक वाले, उनको एग्जेम्प्ट किया गया। 75 लाख वालों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम दे दी। और उससे जो बड़े हैं, जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, थोड़ा देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ कर दें, देश के विकास के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, टैक्सेशन तो उसके लिए जाता है। और ये तर्क देना कि भाई पहले नहीं था,
कोई व्यक्ति, कोई कमोडिटी, कोई ट्रेड सेक्शन इसको अपना फंडामेंटल राइट नहीं मान सकता कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, मुझ पे कभी नहीं लगेगा। ये माइंडसेट अब बदलना पड़ेगा, अब नया नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है, तो हम लोगों की जो एटीट्यूड्स भी हैं, जो माइंडसेट भी है, इट्स अबाउट टाइम दैट दैट माइंडसेट आल्सो बिकेम द माइंडसेट फॉर अ डेवलप्ड इकोनॉमी। आज कई क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि आज हमारे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छी क्वालिटी के हैं, आज हमारे हाईवेज वर्ल्ड क्लास हैं, जो पावर कट होता था आज नहीं हो रहा। आज हम अपने एयरपोर्ट्स देख लें, एविएशन सेक्टर देख लें तो वर्ल्ड क्वालिटी का आ रहा है। क्या रेलवे स्टेशंस वैसे नहीं हो सकते? हमारा आईटी, हमारा फार्मा, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है। लेकिन जो सेगमेंट्स नहीं जा रहे, क्या उसके लिए रिसोर्सेज और साधन नहीं चाहिए? और इसलिए मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि एक बार डायरेक्ट टैक्सेशन का बेस बनेगा तो उस डायरेक्ट टैक्सेशन के बेस बढ़ने से, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बेस बढ़ने से डायरेक्ट टैक्सेशन पे भी उसका एक असर पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं खास तौर के इसलिए बधाई दूंगा और आपका अभिनंदन करूंगा कि एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेवार ऑर्गेनाइजेशन के नाते आईडीएस से लेकर अभी तक जीएसटी के संबंध में भी जो पूरे देश में आप लोगों ने कैंपेन चलाया है, उसमें पब्लिक ओपिनियन को पॉजिटिव रखना, किसी भी इकोनॉमिक सुधार को करने के लिए आवश्यकता होती है कि सरकार का डायरेक्शन, दिशा ठीक हो। आधे अधूरे रवैये से कोई रिफॉर्म नहीं होता। गवर्नमेंट्स हु ब्लिंक आर नेवर एबल टू रिफॉर्म। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में कई बार हम लोगों को कठिन निर्णय करने पड़े और एक सरकार की क्षमता थी कि सरकार निर्णय करते समय घबराती नहीं थी और उसका एक प्रत्यक्ष असर हुआ कि एक के बाद एक हमारी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बनती गई। और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे कदम लिए जाते हैं इस देश को मजबूत करने के लिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो रवैया अपनाया है उसी दिशा में रवैया अपनाएगी। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी। और अब हम चाहेंगे कि राजस्व सचिव हसमुख अदिया साहब से एक छोटा सा सवाल कि जीएसटी लागू हुए 12 घंटे का समय हो चुका है, कैसा रहा है 12 घंटे का सफर? 12 घंटे का सफर अब तक कैसा रहा है जीएसटी लागू होने के बाद? धन्यवाद शिशिर। मैं भी इस मौके पर सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। क्योंकि जो सफ़र की शिशिर बात कर रहे हैं, उस सफ़र में ये इंस्टीट्यूट और उनके सदस्य हमेशा हमारे साथ रहे हैं। जब जब हमने जीएसटी का लॉ या रूल्स पब्लिक डोमेन में रखा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुझाव हमको इंस्टीट्यूट की और उनके सदस्यों की तरफ से ही मिला है। एक तरह से कहे
तो ये लॉ और रूल्स बनाने में उनका बड़ा योगदान है, तो उसको मैं यहाँ एक्नॉलेज करता हूँ, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। जीएसटी की सफ़र तय करने में हमको समय इसलिए न लगा और अच्छी तरह से ये सफ़र तय हो गई क्योंकि एक प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति हमारे पीछे थी। तो अधिकारियों के लिए ये डिफ़िकल्ट काम नहीं था कि जब राजकीय इच्छा शक्ति थी तो हमने तुरंत अपनी टीम को साथ लेके सब ने काम बांट के, सब ने काम मिल के, कंधे से कंधा मिला के हम समय के अंदर ये काम पूरा कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ट्रेड और इंडस्ट्री से आगे थी और ट्रेड और इंडस्ट्री ये कह रहे थे कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए। Dr. Adia said government was much ahead of trade and industry. Mr. Madhukar, I want to ask you, as a chartered accountant, you represent the institute here. What GST is here, GST has been rolled out. What are the issues, top 3 issues, if you can identify, that the industry and businesses are facing? Thank you. The ICI, as our president has said, has rolled out a number of initiatives. We have worked basically on the foundation. We tried to see that at least 50 to 75,000 chartered accountants should be GST ready. This was our goal in 2016. In 2015, we did a research paper on transition credit, which I think was adopted partially by the government, which also enthused us. And after that, the government has been asking us, we prepared the training material for the government within a month. As far as going forward is concerned, we are hoping to use more and more technology, and we have already started a virtual course, and we are going to also make a GST kit, which will be available for the whole of India, not only for the chartered accountants. Other than this, we have got certificate courses, which are in-depth courses, which are already running, which we want to increase and take it further. Since President has already told all of you what initiatives we have taken, I think I will stop with that and give more time to the other panelists. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। और अब मैं आग्रह करूंगा फीडबैक इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन विनायक चैटर्जी से कि वो अपनी बात रखें। भले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के नाते आपकी क्या सोच है जीएसटी को लेकर के, किस तरह से ये कामयाबी के सफ़र पर आगे बढ़ेगा, और जिस तरीके से वित्त मंत्री साहब ने कहा है कि जीएसटी मे बी अ डेस्टिनेशन टैक्स, but for India, it begins a new journey. Thank you, Shishiji. I like the idea that while I represent the infrastructure sector, you have asked me to talk on behalf of industry in general, and I will extend that license a little more and express my feelings also as a citizen of the country. I think in this whole GST exercise, it has been an overwhelming feeling of positivism on 2 stellar aspects of our democracy and our society. Let me take this overwhelming occasion to just briefly outline that for you. One is the display of maturity of the democratic system. In 1991, it started as part of the reforms agenda presented by Dr. Manmohan Singh as Mr. P.V. Narasimha Rao's FM in 1991, and was simply called the value-added tax. It then traversed 16 years, 5 prime ministers, and 6 union finance ministers. Prime Minister Vajpayee set up the GST panel in 2000, headed interestingly by the then left finance minister, Dr. Ashim Dasgupta of West Bengal. Thereafter, Congress brought it to the House. The Trinamool Congress finance minister was requested by Shri Jaitley to head the states panel. And finally, Prime Minister Modi, our finance minister, Mr. Jaitley, and his very, very illustrious team rolled it out. You cannot get a more resounding success of India's democratic process than this degree of political pluralism. It is often said that democratic processes move slowly, but the GST process indicates
that they certainly move surely. As we can see with the multiplicity of complexities involved, it does reflect the age-old saying that the mills of God grind slowly, but they grind exceeding small. It is a moment of pride for us that this huge degree of complexity is handled by this very, very mature democratic process. The second point is much simpler, and this is something where I would want to pay a compliment on behalf of Indian industry to the Honorable FM, to Mr. Adia, and to the entire team, that we understand that all the decisions in the 17 meetings of the GST Council were taken with consensus. I repeat, all 17 were taken with consensus of all, and no voting has to be restored to. This is indeed participative democracy and cooperative federalism at its best shining ever. And we compliment you, sir, and your team for these two vital aspects of the democratic process that you, the government, and your team have upheld. The infrastructure sector is as complicated with many subsectors, and therefore I think there will be many opportunities to interact on the nitty-gritties. Let me hold that for some future time to come and interact with you and your team. This overwhelming occasion, sir, is to pay homage to the beautiful processes that you and your team have followed in upholding true democratic traditions. Thank you. Finance Minister mentioned about formalization of the economy. Dr. Ranade, I want to come to you. How do you see the GST's impact on the economy? Do you see the GDP expanding? And also on the inflation. There was a fear that prices will rise, GST would be inflationary. What is your take? Yeah, thank you. First of all, let me सब इंस्टीट्यूट को मैं बधाई देता हूँ कि नेशनल CA डे पे GST रोल आउट हो चुका है. एंड दूसरा आपको मैं बताऊं कि आज 1 जुलाई को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि है और उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा हक है और वो मिलके ही मुझे मिलके ही रहेगा. GST का जो टैक्स रिफॉर्म है उस स्वराज को ज़्यादा मजबूत बनाता है. इट मेक्स आवर इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर. We are a very large economy, but our tax to GDP ratio is among the lowest among our peers. I think this tax reform will go a long way to correcting that situation. Secondly, it is a big positive step for Make in India because it creates a unified, unfragmented, all India market for entrepreneurs. There is no interstate friction. And the third is that the tax reform collapses some 1,800 different rates and slabs into just 6. Ideally, we should go from 6 to maybe 3. आपने पूछा कि what does it do to inflation? Because a large part of our economy is services, and that service tax rate is going to inch up a little bit, and the offsetting tax credit will take some time to work out. At least initially, मुझे लगता है 3 to 6 months, we may have some situation where there may be some prices may go up, but eventually I think it's going to lead to overall price stability and lower inflation. And of course, once the Make in India full impact is felt, and once we have a larger coverage of GDP, full coverage of GDP, we will see a much bigger impact on GDP. Thank you. Thank you, sir. बहुत-बहुत धन्यवाद आपका. और हमारे जो आखिरी पैनलिस्ट हैं मिस्टर गणेशन सर, आप एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, फर्टिलाइजर कंपनी से जुड़े हैं. आखिरी में अगर मैं आपसे संक्षिप्त में चाहूँ कि कल GST काउंसिल ने फैसला किया कि फर्टिलाइजर पे 12 से 5% कर दिया जाए, और एक जो बड़ी बात ये हुई कि किसान इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं पाता है, तो आखिरकार उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत है, हमने लागत में कमी करके जो दी है. आपको क्या लगता है कि इस पूरे जो फैसले हुए हैं क्या असर पड़ेगा कृषि पे और किसानों पे? फॉर एग्रीकल्चर, या Thank you very much. I know I'm talking about GST before a community that talks about numbers day in and day out. So I'll just give a macro picture of Indian agriculture. Indian agriculture ranks second in the world. That's the kind of rank that Indian agriculture sector enjoys globally. And if you ask me what is the rank of India's services sector, it is number 11. And manufacturing sector is number 12. So it is the farmers of India who have taken India to a very, very high level globally. Now,
Basically, I'm an agronomist and I'm heading a team of people in my company doing policy analysis. We are highly optimistic that with the introduction of GST, and with the dissolving of the internal trade barriers, it's bound to be a biggest boon ever given to Indian farmers. And our own analysis shows that this will considerably aid the government efforts to increase, to double the farmers' income by 2022. Now, having said this, since I said I will also drop some numbers, traditionally, our farmers have taken the Indian agriculture GDP phenomenally. For example, from 2000 to 2014, the agriculture GDP almost tripled because the production has shifted from traditional food grains to dairy products and horticulture. Now, these are all highly sensitive to long transport or delay in transport. With dissolving the traditional barriers between the trade among the states in India, this will improve the efficacy of marketing, resulting in better revenue. So we are highly hopeful that if there is one sector that stands to benefit a lot with introduction of GST, it is the Indian agriculture sector. Shortly, we are publishing a paper as to how this will be realized sooner than what most people realize. Thank you very much. The farm sector will greatly benefit. Dr. Adia, I have a question for you which is on top of mind of industry and businesses to quite an extent, which is how would the anti-profiteering provision be used? Will the government be very aggressive, or how is it going to work out? Well, ऐसा है कि काफ़ी चर्चाएं हो रही है मीडिया में एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लोज के बारे में। हर जगह हम ये सफाई देते आए हैं कि ये क्लोज ऐसा नहीं है कि जो हम हर छोटे व्यापारी के साथ यूज़ करेंगे। ये क्लोज ऐसा नहीं है कि जो हर होलसेलर के साथ हम यूज़ करेंगे। ये जो क्लोज है वो बेसिकली डिटरेंस के लिए रखा गया है। किसी भी देश में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो कि ट्रांजिशन हो रहा है जो टैक्स का, उसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों को ज़्यादा पैसा चार्ज करे। नाउ ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होंगे और एंटी प्रॉफिटियरिंग कोई इंस्पेक्टरों द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी जो है वो एक ऑटोनमस अथॉरिटी होगी और उनको मदद करने के लिए कुछ एक्सपर्ट अकाउंटिंग के ऑफिसर्स होंगे जो कि सरकार के पार्ट होंगे। तो जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो बैक ऑफिस में ये हमारी जो विंग है वो करेंगे और फाइनल ऑर्डर करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। तो इस तरह से ये बड़े लोगों के लिए है। मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो कि मास प्रोडक्शन कर रही है, ऐसे गुड्स बना रही है जो कि पूरे देश में बिका जाता है, और ऐसी कंपनी ने मान लो रेट कम होने के बावजूद या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देने के बावजूद अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मतलब उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसकी कटौती कंज्यूमर को पास डाउन नहीं की, तो उस केस में ही ये प्रोविज़न का उपयोग करेंगे। ऐसा हमने पहले भी कहा है, अब भी हम कहना चाहते हैं, इट इज़ टू बी यूज्ड स्पेरिंगली बट अगेंस्ट बिग पीपल एंड दैट ऑल्सो आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सर। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं वित्त मंत्री जी। एक सवाल जो कि कई लोगों ने भेजा है कि देश के तमाम राज्यों में इकलौता जम्मू एंड कश्मीर है जिसने अभी तक जीएसटी के लिए जो कानून है उसको मंजूर नहीं किया है। ऐसी सूरत में वहाँ के लोग, वहाँ के कारोबारी, उन पर क्या असर पड़ेगा? वित्त मंत्री साहब, आपसे।
जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में मैं इतना कहूँगा कि सारे देश में कल रात से ये कानून लागू हो गया है और जीएसटी की एक व्यवस्था पूरे देश में इस्टेब्लिश हो गई है। हम लोग पहले दिन से ही प्रयास कर रहे थे कि जम्मू और कश्मीर भी जीएसटी चेन का एक अंग बने। जम्मू कश्मीर कंजम्पशन स्टेट है। दूसरे राज्यों का मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस सामान जो है वो जम्मू कश्मीर में बिकता है और स्वाभाविक है कंजम्पशन स्टेट के नाते DNK जब जीएसटी का हिस्सा बनता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर टैक्सेशन का शेयर भी उनका बढ़ेगा। दूसरा उनको लाभ ये होगा कि जम्मू कश्मीर में जो सामान बिकेगा वहाँ के कंज्यूमर्स को भी इनपुट क्रेडिट का लाभ मिलेगा और उसको टैक्स एक बार ही देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की सरकार ने विधानसभा के सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और उस ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ लोगों ने विरोध किया इस आधार पर कि भाई इससे राज्य का फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भारत के साथ हो जाएगा। और मुझे खेद है इस बात का कि जो हमारे एम्पावर्ड कमेटी के फाइनेंस मिनिस्टर्स के अध्यक्ष थे, जो जीएसटी की वकालत देश भर में कर रहे थे, जो जब मैं वित्त मंत्री बना तो वो अध्यक्ष थे, JNK के ही थे, विरोध करने वालों में उनकी भी मैंने आवाज सुनी। तो इसलिए मैंने तो सबसे बात की, वहां के मुख्यमंत्री से भी की, राज्यपाल से भी की, ओमर अब्दुल्ला साहब से भी की जो विपक्ष के नेता हैं, कि भाई आप अपने राज्य को लेकर आइए इसमें। अगर नहीं लाएंगे तो इसके क्या असर होंगे कि जो सामान जम्मू कश्मीर में बिकेगा बाकी देश की तुलना में महंगा होगा और आपके यहाँ रहने वाले लोगों को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा कि उनको टैक्स 2 बार देना पड़ेगा। दूसरा असर ये होगा कि मान लीजिए मैं श्रीनगर या जम्मू में हूँ और मुझे कार खरीदनी है और वहाँ कार महंगी मिलती है, तो मैं पठानकोट में कार खरीद। Rains are coming. Gods are blessing all of us. As we lucky ones stand witness to this momentous occasion, which incidentally coincides with the 60th Foundation Day of the Institute of Chartered Accountants of India, I take pride in extending warmest welcome to a galaxy of honorable dignitaries and delegates present here for the double celebrations. In future, whenever we'll celebrate a CA Day, the day will also remind us about this GST Day. First and foremost, I would like to welcome all our honorable ministers, not only on the dais, some of them who are sitting in the front row also, the leading lights of our Indian polity, for sparing their invaluable time to mark the opening of a golden chapter of our history of reforms on this memorable day and grace the event with their esteemed presence. Sirs, it's a great privilege and honor that your good selves have kindly consented to be present among us and with the members of trade and business community and many, many more lakhs and crores watching on TV. Memories of this Foundation Day will indeed be long cherished by each one of us present here and the lakhs of others watching through our branches and regional councils. Please accept our gratitude, sirs. I welcome Hasmukh Adhia ji, Revenue Secretary, for agreeing to guide us and share the government view on the GST implementation and the way forward. The way GST has been rolled out under his supervision is highly commendable and truly noteworthy, and we look forward to a smooth transition. My heartiest welcome to Sri Tapan Ray ji, Secretary of our Administrative Ministry, the Ministry of Corporate Affairs, for blessing us with his presence. I wish to acknowledge the proactive support, encouragement and help provided by the Ministry of Corporate Affairs under the guidance of Sri Ray in approval of a new scheme of education and training, enabling us to launch the same today. We are thankful to you, sir. Honorable dignitaries, on this momentous and grand occasion, I wish to touch upon some of the very significant contributions that the Institute has made in the service of the nation. As was already pointed out, we are the largest single accountancy body. US is larger than us, but it is state-wise controlled. It's not a single body. We got 2,72,000 members, 8 lakh CA students, and 163 branches. Apart from this, we have 30 foreign chapters. We as an institute are the catalyst for fiscal and corporate reforms. As Honorable Jaitley ji mentioned, there has been 470 programs of income declaration scheme last year covering 46,000 people. In GST, we are going all out
in the knowledge dissemination. As I mentioned in the first half, when Honorable Finance Minister and other ministers were not there, we have done more than 2,000 programs covering 130,000 participants in the last few months. Massive programs are going on, and the whole endeavor and effort is this challenging task of a new reform, how do we smoothen it as much as possible? On the corporate laws front, we are facilitating the insolvency and bankruptcy law, a new area which has come up last year. Our Section 8 company is one of the first, is the first licensee for the Insolvency Professional Agency. And also we are supporting the government on the Companies Act by various suggestions. Honorable Sirs, our examinations are one of the most challenging courses, not only of India, across the world. And our examination systems, this is for you, my students. We are having the most robust examination system, which is time-tested in decades. The accounting reforms, we are a strong proponent of accounting reforms. We are helping the Indian Railways convert their accounts from cash to accrual. Once that is done, in about a year's time, I think much more we can do in the government sector on the cash to accrual system, which will lead to better financial management, informed and improved decision making, especially for the bodies, especially on the outcome-based budgeting, and very, very effective utilization of our national resources. As far as standards are concerned, today India is at par with the world. We have converged with the IFRS standards from 1st April 16. We have got 40 IFRS converged standards called Ind AS, and our auditing standards are benchmarked to the international auditing standards. There's no difference except small convergences which we have decided. And we as an institute are facilitating the adoption and implementation of these standards. Our continuing professional education also very, very robust. Huge amount of programs all across the country for training the members on a continuing basis. Today, technology disruption is happening across the whole world in various sectors and businesses. Keeping that in mind, we have started a digital accounting and assurance standard board to harness this disruption, to see that we are not impacted by the disruption, we harness it for our benefit. Father of our nation, Mahatma Gandhi ji said, the future depends on what we do in the present. And also there is a saying that nothing endures but change. Taking inspiration from these words of wisdom, we commit ourselves to the nation, to the national agenda of change for the better. The Institute and the Indian accountancy profession pledges its proactive support to the ongoing push for reforms, good governance, ease for doing business, simplified tax regime, and financial discipline and fiscal prudence. Sir, together we can script a glorious future for India. Jai Hind. Thank you, CA नीलेश विक्रम सिंह। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय वित्त मंत्री जी के दिशा निर्देशन में रिस्पेक्टेड डॉक्टर हसमुख अढ़िया रेवेन्यू सेक्रेटरी पूरे देश में इस महामिशन को सरलता के साथ सुचारू रूप से लागू करने में कर्मठता से जुटे हुए हैं। हम निवेदन करते हैं डॉक्टर अढ़िया से कि कृपया अपने विचार व्यक्त करें। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स के प्रेसिडेंट, ऑफिस बेरर्स, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, I am told I have got 10 minutes to talk to you. So let me give you some brief guidance about certain key points. There is some problem with the camera, I think. Is it so? There is some problem with the camera or what? No. Okay. Okay.
Well, first of all, I have a request to make to the Institute. There is a big information gap between the traders and small scale industries and the GST law. So one specific suggestion I would like to make to the Institute is that if some of those charter accountants who are serving in various parts of the country, if they can give us a feedback on which are the most frequently asked questions about which people want to know, then we will be able to address these questions either through a press note or through frequently asked questions published in the newspaper. So my suggestion is that let all the charter accountants collect some questions on which people want to know more about it, so that we can do wide publicity of the replies to these questions. I'm sure this is a service which you can give to the government and will be immensely benefited by that. Having said that, there are a couple of issues on which people want guidance. And through the charter accountant brothers and sisters, we want to give that guidance. One is the registration process. We have sent the provisional GSTIN number to about 80 lakh people. There are 67 lakh people out of them who have already activated their ID by logging in at least once and changing the password. The remaining people, if they want to do business after 1st of July, they have to come on board within 30 days. If they don't want to continue the registration, it is a different thing. But if they want to continue business and be registered, they have to come on board within 30 days, by 31st of July, by 30th of July. The second thing is that those people who have logged in with the help of provisional ID and those who have given all the details and submitted their forms, we are sending them the provisional certificate of registration. In the last 3 days, I am told 22 lakh people have been sent provisional certificate of registration on their email ID. The remaining people will all get it within 1 week. So if you have filled up your form, you will get a provisional certificate of registration which can be kept with you so that there is no harassment. And those people who have completely filled up all the details will also get their final certificate of registration again on email, and it may also be available on your e-filing site, e-filing account on the GSTN site. So that also will be sent to you in due course. The new register, those people who are not covered by taxation at present, and the item is coming in tax for the first time, they have to get their new registration within a period of 30 days. But they can continue to do their business for a period of 30 days, but within 30 days they have to register as a new registrant on the website of GSTN. There are a lot of questions asked about the transition provision. We have given complete clarity about it in the newspaper advertisement also. On the closing stock which is available with you on 30th of June, or we can say opening stock which is available today, if you have got the excise or VAT paid document of having paid excise and VAT, you can get 100% credit
against SGST, CGST. So if it is a VAT payment which is already made, you can take credit of it against SGST. And if it is an excise which is paid, you can take credit of it against CGST. By chance, if you do not have the document of having paid excise with you, but the item was earlier excise taxable or VAT taxable, then you would get something called deemed credit. If the rate of taxation on that item is 5% or 12%, you can take 40% of CGST or SGST payable as the deemed credit. And if your item of tax is 18% or above, then you can get 60% of the deemed credit against the liability to pay CGST and SGST. If you had an exempt unit and the goods were manufactured by the unit which was exempt earlier because the turnover of that unit was below 1.5 crore, then also those goods which are produced by small and medium industry, if it is given to the trader and trader is having that stock, then trader will be able to claim input tax credit in the deemed category, 60% or 40%. But with the manufacturer, it is not available. The deemed credit is available. Please remember, all my brothers and sisters who are chartered accountants, that deemed credit is available only to the traders. It is not available to the manufacturers. So please keep it in mind. The second question which is frequently asked in transition provision is whether if the item itself was exempt earlier. For example, the fabric was exempt earlier, textile industry mein fabric. Whether you can get deemed credit against that on the closing stock. The answer is no, you cannot get it because that item had no excise, no VAT earlier. So there is no question of giving any credit against tax which is not paid. When the tax is not paid, when the tax was not payable, neither VAT was payable nor excise was payable. For example, in case of fabric, there is no question of any deemed credit there. So all the stock which is lying on 30th of June, all the traders will have to account for it, and whenever it is sold, they have to pay the duty on it, the SGST and CGST. So these are some of the common points which are being referred to us. And so I thought it will be useful if all of you can disseminate this information correctly to people. As far as return filing is concerned, there are a lot of misconceptions. One of the misconceptions is that there are 3 returns per month to be filed. We have been saying time and again, including our Honorable Minister has been explaining, that there are no 3 returns per month. There is only one return, of which there are 3 parts. One part is to be filled up by the trader himself, and the remaining 2 parts of the return are computer generated, auto generated, for you to only review. It is nothing, you don't have to do anything about it. So there is only virtually one return. The return in which you show all your sales details, turnover details. And in case of B2B, the return in which you show your invoice-wise detail. Now that is GSTR number 1 to be filed between 1st to 10th of the month. This is the only return to be filed by you. GSTR number 2 is a detail of all the purchases made by you, which will be automatically generated by the computer and put into your account. It is only for the sake of your facility that we are asking you to review it once, so that if there is any transaction missing in your purchase, suppose your seller has forgotten to put the transaction, then you will be able to put it.
So it is only for the facility of traders that we are giving you this GSTR number 2. Once you accept GSTR number 2, you have to simply click it. It will be available in the computer. Once you see that nothing is missing, it is perfectly prepared by computer, you have to simply click and push it. And again, GSTR number 3 is nothing else but your total tax liability calculated by the computer, which you are supposed to review only. And once you see all the details are fine with you, you have to simply click it and let it go. So there are no 3 returns per month. There is only one return of which there are 3 parts. One part to be filled up by you, 2 other parts computer will generate it, and you have to simply push it. The other misnomer, misimpression which people have is that everything is to be done online. Some people are giving statement to the newspaper that if I am sick for 5 days, or if my computer is not working, I cannot generate the invoice. Sorry, my dear friends, we are not asking you to generate invoice on the computer online. You can generate your invoice in your own system if you want to do. You can generate manual invoice if you want to do. All we are asking you to do is to keep a record of all your invoice in an Excel sheet, so that on the 1st to 10th of the next month, the same can be filed in form of a return. That is all we are saying. We are not asking you to have continuous internet connectivity and every invoice to be generated only on the computer. Nothing like that. That is a misimpression. People are talking about internet connectivity and saying, how will we file our return online? Today also, including in Delhi, all the states of India have got a requirement of filing VAT online only. There is no difference in that. Every VAT return in every state is being filed online today. So all that we are saying is, if you are filing your VAT return online in every state, now you will have to file GST return online. That is all. There is no difference at all in that matter. I think I should stop here because we are running out of time. I just want to thank all of you for helping us in the GST mission. Thank you very much. Thank you. Thank you. धन्यवाद रिस्पेक्टेड डॉक्टर अढ़िया। पिछले कुछ समय से विश्व भले ही मंदी के दौर में रहा हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के सानिध्य में भारत की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों को छूती रही। अब जीएसटी के महायज्ञ को भी माननीय वित्त मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त है। आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है माननीय वित्त मंत्री जी की कृपया आज के शुभ दिन हम सभी को संबोधित करें, हमें शुभकामनाएं दें, हमारा मार्गदर्शन करें। वित्त मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री संतोष गंगवार